Settle down, kindly occupy the chairs, and clear the way for the procession. Procession can arrive at any time. Once the procession will arrive, it's a request to all of you to rise in your seats to welcome the procession.
I request everyone to kindly get settled down. Procession is arriving. Academic procession in the presence of the chief guest of the ceremony, Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan, Honorable Union Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Professor Ramacharan, renowned international business advisor and author, Founder President, UNESCO Chairholder, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, our Executive President, Shri Rahul Karad sir, Honorable Dr. Mangesh Karad sir, Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Dr. R.M. Chitnis sir, respected Registrar sir, Shri Ganesh Pokre, Honorable Controller of Examination, Dr. Rahul Joshi sir. चव्हाण तिथला एक कॅमेरा फिरवा बेंडवर येतोय तिथं. My dear students and parents, academic procession is on the way, is arriving in the pandal. I request everyone to rise in your seats to welcome the procession. I request everyone in the audience to rise in your seats to welcome the academic procession. Dear friends, the procession is making its way to the dais. I request everyone in the audience kindly rise in your seats to welcome the procession. Academic procession in the presence of all the dignitaries, the chief guests of the ceremony, Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan, Honorable Union Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Professor Ramacharan, Founder President, UNESCO Chairholder, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, Executive President Shri Rahul Karad sir, Honorable Dr. Mangesh Karad sir, Honorable Vice Chancellor of MIT-WPU University, Professor Dr. R.M. Chitnis sir, respected Registrar of the University Shri Ganesh Pokre sir, Honorable Controller of Examination Dr. Rahul Joshi sir, all the flag holders, student council, student clubs, PhD holders, governing bodies, dean, director and associate deans, all the program directors. The academic procession is arriving. A round of applause, my dear friends, and welcome academic procession.
The academic procession is making its way to the dais. Let's give them a huge round of applause, my dear audience. A huge round of applause for academic procession. कोण आहे लाईनवर छान? रेडी? A round of applause, my dear friends, for the academic procession. The academic procession in the presence of our chief guest of the ceremony. We warmly welcome the academic procession. All the graduate students, I request everyone to be there in the pandal. Those who are outside the pandal, kindly come inside the pandal. The academic procession in the presence of Honorable Chief Guest of the ceremony, Dr. Krishna Swami Vijay Raghavan, Honorable Union Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Professor Ramacharan, our founder president, UNESCO chairholder, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, our executive president, Shri Rahul Ji Karad sir, Honorable Dr. Mangesh Karad sir, Honorable Vice Chancellor of MIT-WPU University, Professor Dr. R.M. Chitnis sir, respected Registrar of the University, Shri Ganesh Pokre sir, Honorable Controller of Examination, Dr. Rahul Joshi sir. I request everyone to give them a big round of applause, a huge round of applause, my dear audience. Academic procession is arriving. Dear audience, a huge round of applause. As academic procession is arrived in the presence of Honorable Chief Guest, a round of applause. I request all the dignitaries, Honorable Chief Guest of the ceremony, to kindly join us to light our traditional lamp. I request all the dignitaries to kindly join us to light the traditional lamp. As per our tradition, we'll begin the ceremony by lighting the traditional lamp. As per our Indian tradition, we are about to commence the convocation ceremony by lighting the lamp of knowledge and wisdom. I request all the honorable chief guests, all the dignitaries, kindly light the traditional lamp of knowledge and wisdom. I request the audience a round of applause as we mark the beginning of the ceremony. I request all the dignitaries kindly come up on stage and accept the honorable seats on the dais. I request all the dignitaries kindly come up on stage and accept honorable seats on the dais. I request all the dignitaries, chief guests, kindly come on the stage and accept the honorable seats. I request the audience kindly be seated, kindly occupy your chairs and get settled down. All the graduate students, please be seated in the pandal as we have already started this ceremony. I request all the dignitaries kindly accept the honorable seats on the dais.
Dear audience, dear students, dear parents, dear colleagues, I request everyone to kindly get settled down quickly. I request all the dignitaries kindly accept the honorable seats. Good evening to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all to the sixth convocation ceremony of MIT World Peace University. This is much awaited event in every student's life. Today we come together to celebrate the Today we come together to celebrate the hard work, dedication, and achievements of our graduates. I, Dr. Shalini, welcome all the honorable guests, respected dais, my dear colleagues, students, and parents to this Convocation Ceremony 2024. I request all the students kindly get settled down. I request the audience and the honorable guests to rise in their seats for the national song, and I request my technical team to kindly play the national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyosna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini, Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Please do not sit as we are continuing with prayer. I request everyone to join your hands and close your eyes for the World Peace Prayer. The prayer does not promote any caste, creed, or religion. This prayer is a profound and enduring expression of the university's commitment to fostering global peace. I request technical team kindly relay World Peace Prayer. नमो जीयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातुति गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि बोधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. I request all the dignitaries kindly accept the chairs, and I request audience kindly occupy the chairs allotted to you. Now it's time to begin the formal proceedings of the 6th convocation ceremony. May I request the Vice Chancellor of MIT-World Peace University, respected Professor Dr. R.M. Chitnis sir, to kindly take the proceedings forward. Good evening, all of you. We have to formally start the convocation, and the Chancellor and President will start it. Before that, may I say that by virtue of the power vested in me by the Board of Management of Dr. Vishwarajbaug, MIT World Peace University, as the Vice Chancellor, I hereby declare that all of you who are present and those who are permitted to remain absent are admitted to the respective degrees. I hereby charge you to uphold the dignity and the value of the degree awarded to you by this university in your entire life and profession. May I, with this word, request Honorable Founder President, revered Professor Dr. Vishwarajbaug sir, to declare the convocation open. Sir, please. Honorable Chief Guest of today's function and my learned students, as a Founder President, I declare MIT World Peace University Convocation 2024 open. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, formally, with the blessings of Professor Dr. Vishwarajbaug sir, the 6th convocation ceremony 2024 begins. May I request Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. R.M. Chitnis sir, to kindly propose the welcome address. Thank you, Dr. Shalini. Welcome to all of you in this auspicious occasion, which is the prestigious in the life of every student graduating from MIT World Peace University, popularly known as the Convocation Ceremony 2024. On behalf of our Founder President and UNESCO Chair for Human Rights, Democracy and Peace, revered Professor Dr. Vishwarajbaug sir, on behalf of Executive President of MIRS, MIT Group of Institutions, Sri Rahul Vishwarajbaug sir, on behalf of all the trustee members, faculty members, staff, and on behalf of all the students of MIT World Peace University, may I extend a warm and happy welcome to all of you in this pious gathering. Further, we formally welcome the chief guest of this convocation ceremony, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Member of Parliament and Honorable Minister of Culture and Tourism. Round of applause for him. We also welcome Dr. Vijay Raghavan ji, an eminent scientist who is being honored with Vidyan Maharshi Sanman today, and Professor Ram Charan ji, renowned international business advisor and author.
also cordially welcome all the dignitaries on the dais and off the dais. Dear students, today is the most important day and prestigious day of your life. The convocation gives you a dignity, satisfaction, and recognition of your sincere and dedicated efforts of the last few years in MIT World Peace University. Friends, dreaming is always good, but when you wake up, you have two choices, two options. You can either forget the dream or you can get up to chase the dream till it's fulfilled. The world further in your life is full of opportunities, my friends. Don't get let down if you lose an opportunity, because opportunities are like a stream of a fresh water continuously flowing from the rocks towards you. Friends, as you are aware that your alma mater, MIT World Peace University, an MIT group of institutions, is founded on the strong principles of values and virtues for imparting value-based holistic education and for life transformation as envisaged, conceptualized, and created by Founder President Dr. Vishwanath Karad sir 40 long years ago. Further, the mantle of those inspiring and life-guiding principles is successfully being carried forward by our dynamic and extremely patriotic Executive President, Shri Rahul Vishwanath Karad sir. Rahul sir has spearheaded a movement to name our country as Bharat and to call 15th August as the National Day of Bharat. He has also conceptualized and successfully implemented various social initiatives, including MIT School of Government, Bharatiya Chhatra Sansad, National Women's Parliament, National Teachers Congress, Sarpancha Parishad, National Legislators Conference, and Confederation of Indian Private Universities. My dear students, like Rahul sir is taking the mantle ahead, it is your duty in the entire life that you should build your life, your career, all future endeavors on the foundation of strong values propagated by MIT group of institutions, especially MIT World Peace University, especially Dr. Karad sir and Rahul Karad sir. Before I conclude, let me recite few lines in Hindi for my dear students, that you always have your objectives, your benchmarks, and your manzil to be achieved. मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है. My dear students, मंजिलें बहुत जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है. यानी कि you have to do lot of efforts in your life to achieve your goals. मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है. So you are one of them who will be taking the mantle ahead. Be strong, be courageous, give your best till you succeed. One caution to you that this alma mater is yours. We work here and we'll retire someday, but till your last day on this camp, on this planet, MIT will be yours. इसको कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, MIT को कभी अलविदा ना कहना. बीच राह में हम सफ़र, कहीं बिछड़ जाए आप हमसे अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम सब लौट आएंगे आपके लिए, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना MIT को, कभी अलविदा ना कहना. Stay connected with your alma mater, with your teachers, stay connected with your friends. All the very best for all the future endeavors in your life. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Dhanyawad. Thank you, sir. Thank you for beautiful words. Put your hands together for the Vice Chancellor of MIT World Peace University. Thank you, sir, for a good message. Now, as per our Indian tradition, we would like to felicitate our guest. May I request our Founder President, UNESCO Chairholder, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, to kindly felicitate Honorable Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Union Minister for Culture and Tourism. I request respected dais to kindly join to felicitate Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. I request audience a huge round of applause, my dear friends.
Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. We are fortunate to have today with us. A round of applause, my dear friends. I request to felicitate Professor Ramacharan, renowned international business advisor and author. I request Honorable Founder President and Chief Guest to felicitate Professor Ramacharan. Audience, a round of applause for Professor Ramacharan, renowned international business advisor and author. Thank you. A round of applause, my dear friends. Professor Ramacharan. Thank you very much. May I request Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. R.M. Chitnis sir, to present the batch review. The number of students being convocated in this ceremony from various programs and the number of rankers, gold, silver and bronze medalists from all the programs. I request Honorable Vice Chancellor sir. Thank you, Dr. Shalini. Ladies and gentlemen, please allow me to read the batch review of 2024 graduating batch of MIT World Peace University exactly in 2 minutes and 30 seconds. It is our pride and pleasure to declare that this year 26 students have successfully completed Doctor of Philosophy, that is PhD, from School of Engineering 13, from Computer Science 8, School of Business 1, and Ramcharan School of Leadership 4. In graduate and postgraduate programs, 85 students completed Bachelor of Computer Applications. 293 students have completed Master of Computer Applications. When it comes to science, 118 completed Bachelor of Science and 401 completed Master of Science. In Diploma Engineering, 211 students completed, whereas 1,121 students completed Bachelor of Technology, that is BTech. 35 students have completed postgraduate diploma in Artificial Intelligence and Machine Learning. 142 students in Master of Technology, 143 students in Bachelor of Arts, 12 students in Master of Arts, 812 students in Bachelor of Business Administration BBA, 1,003 students in Master of Business Administration MBA, 4 students in Master of Social Work, 237 students in Bachelor of Commerce, 13 students in Master of Commerce, 39 students in Bachelor of Science with honors, 80 students in Bachelor of Pharmacy, 56 students in Master of Pharmacy, 44 students in Master of Science in Clinical Psychology, and 9 students completed postgraduate diploma in regulatory affairs. 47 students further completed their master's degree in public health. 96 students completed Bachelor of Design. 8 students Master of Fine Arts. 87 students BA LLB. 23 students Bachelor of Law. 38 students Bachelor of Education. And 18 students Master of Education. 11 students completed Bachelor of Arts and Photography. And 7 students have completed Diploma in Photography. 65 students Bachelor of Arts in Journalism and Mass Communication. 66 students Bachelor of Finance and Applied Arts. 23 students in Master of Arts in Media and Communication. 30 students and completed in Bachelor of Arts. 7 students completed Bachelor of Business Administration in Leadership. And 68 students have completed Master of Arts. In all, my dear students and parents, this year we have 5,478 students who have graduated from 160 programs across all the schools of MIT World Peace University. Further, MIT World Peace University takes pride in declaring
467 rankers across all programs, comprising of 120 gold medalists, 85 silver medalists, and 85 bronze medalists. I now request Dr. Anjali Sane, Dean of Economics and Commerce and Public Policy, to read out the names of PhD scholars who will be conferred upon their degrees by the dignitaries on the dais, and the PhD holders will come from that side. Thank you very much. Over to Dr. Sane. I request all the dignitaries to kindly come forward and confer the PhDs to PhD holders. I request Dr. Anjali Sane, Dean School of Economics and Commerce, to announce the names of PhD holders. And I request all the PhD holders to kindly come from the left side of the stage, accept your degree, and then go down from the right side of the stage. Kindly cooperate. I request Dr. Anjali Sane, ma'am. Thank you. With the permission of the dais, can we start? Please put your hands together for the PhD awardees, Mr. Kaustubh Ganesh Kulkarni. Big round of applause to Dr. Kaustubh Kulkarni. Next we have Dr. Omkar Madan Kaulgud. Big round of applause, dear friends. Dr. Omkar Madan Kaulgud, Doctor of Philosophy from Mechanical Engineering. Next we have Dr. Abhimanyu Kisan Chandgude, Department of Mechanical Engineering. Please put your hands together. Dr. Ashish Utge, Doctor of Philosophy from Department of Mechanical Engineering. Dr. Ashish Utge, Doctor of Philosophy from Department of Mechanical Engineering. Big round of applause to Dr. Anjali Askhedkar from Department of Electronics and Communication Engineering. Dr. Anjali Askhedkar. Next, please put your hands together for Dr. Deepa Nath from Electronics and Communication Engineering Department. Dr. Deepa Nath. Big round of applause to Dr. Gaurav Narkhede from Department of Electronics and Communication Engineering. Dr. Gaurav Narkhede. Please put your hands together for Dr. Meenal Deshmukh from Department of Electronics and Communication Engineering. Dr. Meenal Deshmukh. Next we have Dr. Anagha Deshpande from the Department of Electronics and Communication Engineering. Dear students and parents, I request you to please give a big round of applause. All of them are the PhD awardees from MIT World Peace University. Next we have Dr. Sarika Bobde from the Department of Computer Engineering. Dr. Sarika Bobde. Please put your hands together for Dr. Vaishali Suryavanshi from the Department of Computer Engineering. I'm not able to hear the applause. Please continue the big round of applause for Dr. Lakshmi Bhagwat from the Department of Computer Engineering. Dr. Lakshmi Bhagwat. Please put your hands together for Dr. Sridevi Karande from Department of Computer Engineering. Next, we have Dr. Amol Neve from the Department of Management. Dr. Amol Neve from Department of Management. Please put your hands together for Dr. Geetika Parmar from Department of General Management. Dr. Geetika Parmar from Department of General Management.
Big round of applause to Dr. Rajani Chaube from the Department of Human Resource Management. Please put your hands together for Dr. Rajani Chaube from the Department of Human Resource Management. Thank you. I now hand over the podium to Dr. Shalini Tonpe. Yeah, please remain, sir. Please do not say. It's a request because we are here to give the prestigious award, Founder President Medal to, I would like to call Abhijit Pawar. Pawar Abhijit Rupesh. Dear audience, a huge round of applause they deserve because here we are conferring the award, Founder President Medal to Pawar Abhijit Rupesh. A round of applause. Executive President Medal to Kulkarni Anushri Abhijit. Executive President Medal Kulkarni Anushri Abhijit. Congratulations to all PhD holders and the dear students. Kulkarni Anushri, Executive President Medal. I request all the respected dais kindly occupy your honorable seats. I congratulate all the PhD holders and students. Thank you all. Now, I would like to request Professor Dr. Vishwanath T. Karad sir to kindly put his signature on the Convocation Gazette. I request Honorable Dr. Vishwanath Karad sir to kindly put his signature on the Convocation Gazette. Professor Dr. Vishwanath Karad sir is signing formally the Convocation Gazette, which will formalize all the degrees conferred here in this 6th Convocation ceremony. A huge round of applause, dear friends. Dr. Karad is signing formally the Convocation Gazette, which will formalize all the degrees conferred here in the 6th Convocation ceremony. Thank you, sir. Thank you. On the occasion of this convocation, may I request Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. R.M. Chitnis, sir, to kindly administer an oath. I request all the students to rise in their seats for oath. Please place your right hand forward and be ready for the oath. Please, all the students, kindly rise in your seats. I request Honorable Vice Chancellor. All the students will get up, place their right hand in the front, and you will administer the oath. Are you ready? Place your right hand in the front. Here we go. We. I will say, and you, Lord, you will have to repeat it loudly by placing your right hand in the front. I will give the oath from here on behalf of the dais and Chancellor and Executive President, and you will repeat it. We, the graduates of, we cannot hear anything from this side, little loudly. We, the graduates of, further loudly. We, the graduates of Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University, Pune,
hereby pledge that we shall be honest in the discharge of duties in all circumstances in our life. We shall uphold the dignity and integrity of the degrees awarded by Dr. Vishwarajbaug, MIT World Peace University. Thank you all. You can sit down. Thank you, sir, for giving us oath. Dear students, you can sit. Now, I can proudly mention and would like to share you something about the historical event, National Legislator Conference. Bharat, the first National Legislators Conference where legislators from across the country participated. NLC Bharat was an avenue for members of legislative assemblies and members of legislative councils across the nation to gather at one place and exchange ideas in this historic conference. The first edition of NLC Bharat took place in Mumbai from 15 to 17 June 2023. MLAs and MLCs from across the political parties and from all the states were provided with the unique opportunity to interact with each other. NLC Bharat proved to be a true celebration and reflection of Bharat's vibrant democracy. I request the technical team kindly relay the film of first National Legislators Conference. Technical team. भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च ग्रंथ है जो सरकार को शासन चलाने की शक्ति देता है। हमारा संविधान हर भारतीय की पहचान है जो सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। हर नागरिक को समान अवसर मिले, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी संवाद बेहद जरूरी है। संवाद से राष्ट्र निर्माण के मूल मंत्र के साथ राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन यानी नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत की स्थापना हुई। आज़ादी के अमृत काल में एनएलसी भारत का जन्म भारतीय लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुंबई में एनएलसी भारत के प्रथम सम्मेलन का आयोजन 2023 में 15 से 17 जून के बीच हुआ। इस सम्मेलन में अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर महोदय और एमएलए एमएलसीज ने भाग लिया। राजनीति के इस महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े गैर राजनीतिक मंच एनएलसी भारत के गठन की साक्षी बनी। All of us, we are Janapratinidhi. We are public representative. That is important. इस सम्मेलन के जरिए राजनीति से हटकर बात हो रही है। देश के 4,500 विधायक कैसे बने जनता की आवाज, राज्यों के बीच संवाद को कैसे बेहतर बनाया जाए, जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र भारत के सामने यह कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जन कल्याण के लिए बेहद जरूरी था। आजादी के 75 साल बाद भी राज्यों के बीच आपसी संवाद का ऐसा कोई मंच नहीं था जहां सभी राज्यों के विधायक दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सुशासन पर बात कर सकें। Thank the young man, Shri Rahul Kalbhor, behind all this. मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की कामयाबी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में एनएलसी भारत साझेदारी और संवाद से राष्ट्र निर्माण का एक नया इतिहास लिखेगा। एनएलसी भारत की गौरवशाली शुरुआत के बाद आज हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि अगर संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है तो संवाद उसकी धड़कन और एनएलसी भारत उस धड़कन की सबसे बुलंद आवाज है। My dear friends, a round of applause for the man behind this historical event, Shri Rahul Kalbhor, sir, our Honorable Executive President.
is an educationist, and he is committed to empowering nation through empowering its youth to reach their true potential via holistic and value-based education. He is the chief initiator, MIT School of Government, first school of Bharat for political leadership, founder Bharatiya Chhatra Sansad, India's first and largest platform hosting Indian students' parliament. He is the founder of Sarpanch Parishad, National Legislator Conference, National Teachers Congress, National Women Parliament. I would like to call a visionary executive president, Shri Rahul Karad sir. Thank you. Janani Janmabhumisha Swargadapi Gariyasi. What a lovely day, my friends. Today, this is one of the very important historic occasion in your lifetime and, of course, in the institution history. First of all, let me welcome the Honorable Chief Guest, शेखावत साहब. आपका यहाँ पे आज आना हुआ, मैं मन से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ. भारत सरकार में सबसे important, one of the important portfolios he is holding, and he comes from a very humble background, and I request, just now you all saw this very film here. You all may be a little surprised also why there is a film shown on the NLC in this particular gathering, but the message is very simple, my dear friends. The dome, what you see here, the very important monument for the world peace, which is created by our beloved founder, the unification of science and spirituality, ultimately to reach towards the world peace, and of course to what are the tools and what are the various other mechanisms, the machines, I mean to say, and the democracy is one very important tool. We saw just now Honorable Prime Minister bowing down in front of the Constitution, and the Constitution copy is given to each one of you. So I, myself and all our academic leaders sitting here, our founder, we all feel, Honorable Minister, that this is a very important thing, that we as a society, we as a evolving society after 77 years of our independence now, the social belongingness, our societal transformation, the societal problem solving, so who all will do that? So this is you people who are going to pass out from this institution. So all the parents sitting here, I wish to welcome you. I think, I'm sure you all are very proud feeling today that your award is passing out from this institution. All my deans sitting, the directors, program directors, everybody sitting on the dais, they have taken a great efforts for your transformation, my dear students. We have another very important guest of honor here, Shri Ramcharan Sahab, a celebrated management guru and a consultant. At the age of 84, worldwide, he has been traveling last 50 years. He's in America, and he has been guiding the biggest corporations of the world, including, you know, the Reliance Group, Adani Group, and various such other ventures in our country also and globally. Thank you, Ramcharan Sahab, for your participation today. We have Shri Vijay Raghavan Sahab. My dear students, this is a very fundamental, he's one of the eminent scientists of the country. Vijay Raghavanji is here. Dr. Mashelkar, who is a very dear friend of our institution, our founder's friend, and who is advising the principal advisory body of our scientific mission at MIT-WPU University. And he felt, and we all felt, that India has to take a leadership. And I think this institution is always championing this very thought, not just in the city of Pune, Maharashtra, but globally, that the India has an important role, because the science and spirituality, the technology amalgamation, when we say, my dear friends, in the days to come, which is that nation which can evolve the capital, the spiritual capital of the world. So this is a country, the Bharat. And thank you, Madam, and Dr. Chitnis, you said about transforming India to Bharat, and India name was given by somebody else. So while going, I'm just trying to communicate all of you that keep these certain thoughts, which are very well sowed by our beloved founder, Dr. Vishwarajbaug Karadji, that Bharat ki baat, the originality, the original thinking, not just cut, copy, paste, looking at the West and doing something and making business out of it. That is not a origin of our country, my dear friends, but somehow in the historical background, because of various reasons, we lag behind. But now that the time is again coming back, my dear friends. And you people, when you go to corporate and the industry and various such ventures tomorrow, every one of you need to think what way we can change our country. And this, while going, we have given our religious scriptures, the life-guiding scriptures is a message of our founder, my dear friends. We have given Bhagavad Gita. Also, we have given Quran also. We have given whoever from that particular faith, we have given other
religious scriptures also, Honorable Minister, while going, and one sapling. They need to show the message of environment in this country. So I think this must be the only university, this Sarvapalli Radhakrishnan ji Pagdi, this our Bharat message. For so many years we have been wearing the gowns, the colonial mindset, the casteism, communalism, corruption, criminalization, and colonial mindset. How do we really fight with all these issues? And we have to give proper solutions. Nothing wrong. We are a global society, but I think not at the cost of, you know, we can't just say ki we are nobody and others are great. And that's how I think this psychology, because of the so many invasions and other such forces which have changed our mindset. And we all need to think, my dear friends. And I have a very fundamental question, Vijay Raghavan Saab, that today 80% syllabus, the engineering, mechanical, computer, whatever branches, this syllabus is very well created by the West long back. And some Raman effect and many such other in the syllabuses of our Indian education system we have been trying to imbibe. But today also in management education, Ramcharan Saab, hardly how many Indian cases we are teaching. These questions I'm asking myself and our all academia. We all need to think. The majority, 90% syllabus is created in the West. And of course, we all have a very proud feeling that some 1,000, 2,000 years back, in this very nation, in this very motherland, our own Janmabhoomi, my dear friends, that so many inventions and so many creations we say. Was there a science? Yes, there was a science, in medical also, and so many other areas. But in the modern time, I think we missed the race, and somewhere we couldn't articulate and formalize this very thought process in the education system. But in the days to come, so many our Indian scientists and so many great people, you know, they are working worldwide. Our diaspora is making us feel proud. And so much can be said. So I do not wish to talk too long. All the parents and everybody, please do connected with this institution. जिनके भी पेरेंट्स आए नहीं, आप उनको भी हमारी संस्था की तरफ से नमस्कार बोलिए. हमारे फाउंडर साहब, उन्होंने जो कमिटमेंट यहाँ पे दे के ये इंस्टीट्यूशन 40 साल में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो एक पूरे भारत का जो इंजन है, उसमें जो एक 8-10 अच्छे संस्थान हैं शेखावत साहब, उसमें ये एक संस्थान है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे किया है, जिसकी तरफ एक मॉडल के रूप में एक सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम आने वाले समय में खाली भारत का नहीं बट विश्व का वर्ल्ड सिस्टम इसके बारे में देखेगा. And our founder has a vision that can we have a global education managing council where some such this peace syllabus, the spirituality component. The Bin Laden was also engineer, but a destructive mindset. This is an example given by our founder. How do we really create graduates who can create order in the society? Your knowledge need to be utilized for the betterment of the society, my dear friends, not to create harm or not to show arrogance to anybody. So much can be said. So once again, let me welcome Ramcharan Sahab, Vijay Raghavan ji. Dr. Mashelkar was having a very deep feeling, and we all felt कि भारत सरकार अपनी तरफ से और बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं, IIT, टाटाज ने IIC बेंगलोर जैसी संस्था खोली, इतना अच्छा काम हुआ है देश में, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि और बहुत काम होने की ज़रूरत है. इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा पॉपुलेशन. सो बहुत मूलभूत फंडामेंटल विचार से हमने ये जो अवार्ड आज आपको हम कन्फर करने जा रहे हैं. यू आर सच अ इम्पॉर्टेंट, द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, सच अ एमिनेंट. आई एम श्योर योर प्रोफाइल वी हैव शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू. After this particular ceremony, in the different pandals, they all will be getting distributed. Degrees will be conferred on them separately by all the deans and directors. But I have a very emotional feeling that this very award, the last year, Dr. Mashelkar and Dr. Bhatkaran, we all said that this award can really communicate a different message. That in this convocation ceremony, one such award, which will give very proud feeling that in this land we talk about fundamental sciences and so many important things, जिससे बहुत एक मूलभूत विचार होके भारत के ट्रांसफॉर्मेशन में आप सब लोगों का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा. आप सब लोग एक मैसेज लेके जाइएगा और फिर से एक बार वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी और भगवद गीता की कॉपी, वो उसका मकसद आप समझिए. शायद बाद में जब आप थोड़ा 25-30 साल के होंगे तब पता चलेगा कि इस संस्था ने आपको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और आपको भगवद गीता की कॉपी यहाँ पे क्यों दी गई. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार शेखावत जी, आपने समय निकाला. रामचरण साहब आपका भी, और विजय राघवन साहब धन्यवाद. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir. Thank you for your motivational words. Now, my friends, today we are going to witness the moment, the prestigious award, MIT-WPU Vigyan Maharshi Samman.
upon the distinguished individual, Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan. Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan, Padma Vibhushan awardee, has made a significant contribution in the field of science. I request technical team kindly relay the film made on life and work of the Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan. Over to you, technical team. Padma Shri Dr. K. Vijay Raghavan is a visionary scientist, the DAE Homi Bhabha Chair Professor and Emeritus Professor at the National Center for Biological Sciences and former Principal Scientific Advisor to the Government of India from April 2018 to April 2022. He also served as Secretary of the Department of Biotechnology from 2013 to 2018. As Principal Scientific Advisor, he led initiatives that harness science, technology, and innovation to uplift India's most vulnerable and promote sustainable development worldwide. Dr. Vijay Raghavan also played a pivotal role in establishing NCBS in Bangalore, making it one of India's leading research institutions in biological sciences. With a background in chemical engineering from IIT Kanpur, a PhD in molecular biology from the Tata Institute of Fundamental Research, and postdoctoral research at Caltech, his research interests span development biology, genetics, and neurogenetics, focusing on how the nervous system and muscles control complex behaviors during development. Dr. Vijay Raghavan's remarkable achievements include the Padma Shri, the Shanti Swarup Bhatnagar Prize, the Infosys Prize, and his election as a Fellow of the Royal Society. He is also a Foreign Associate of the US National Academy of Sciences, a member of the European Molecular Biology Organization, and the American Philosophical Society. Please join us in welcoming Dr. K. Vijay Raghavan. A round of applause, my dear friends. I request respected Registrar Sir, MIT World Peace University, Shri Ganesh Pokre, to kindly read the citation of honor. Thank you very much. It is an honor and privilege to present MIT World Peace University's second Vigyan Maharshi Samman to Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan, specifically for his pioneering and path-breaking contribution to basic scientific research and extraordinary leadership in the field of science. He has made a pioneering contribution to developmental biology, genetics, and neurobiology. His path-breaking research in progression of development, especially integrated sequential development of sensory and locomotory organs of fruit fly, has received worldwide accolades. In recognition of his exceptional dedication and lifetime contribution to pioneering scientific research, Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University is proud to bestow this honor upon Professor Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan on 19th October 2024, that is today, the day of convocation ceremony of MIT World Peace University. We are proud of you, sir, for being an extraordinary scientific and your contribution to the scientific research. I request a big round of applause when we are bestowing this award. I request the dais to come forward and bestow the Vigyan Maharshi Award, second Vigyan Maharshi Award to Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan. A big round of applause. This is an extraordinary contribution in the field of scientific. There is a message in the work and life of Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan. A huge round of applause, my dear friends, dear audience, as we confer the MIT-WPU Vigyan Maharshi Samman on Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan. Standing ovation, my dear friends. I request everyone in the audience to give standing ovation to Vigyan Maharshi, Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan. Continue the round of applause, dear friends. Such a beautiful moment, such a proud moment for all of us.
I request respected dais kindly be seated. And I request Vigyan Maharshi Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan sir kindly say few words in response to the award. I request respected Vigyan Maharshi Dr. Krishnaswamy Vijay Raghavan sir. Over to you, sir. Respected President Emeritus Dr. Vishwanath Karad, Executive President Rahul Karad, Vice Chancellor, members of the faculty, the Chief Guest, Honorable Mantriji Gajendra Singh Shekhawat, and our guest of honor, Sri Ramcharan. It's a great honor to be here. I should say it's also very embarrassing because whatever successes individuals have in our scientific system, it's due to the teamwork of students, postdoctoral fellows, and institutions. So we stand on the shoulders of the efforts of everyone, and recognition and successes symbolize a representation of all of you. So thank you all very, very much. Now, today is a great day for all of you students particularly and your parents. You're going forth into the world, and the world is now a much more complex place than it was even 10 years ago, or certainly over the last 50 years. There are many formidable challenges: climate change, extreme weather events, problems of sustainable development, availability of water, and economic growth. And these problems are genuinely formidable, but there's no problem which cannot be tackled by us having on one side deep domain expertise, but also breaking the silos of these expertise and talking to each other. And that is what a university education is about. It's not only about your classrooms. I would go to the extent of saying the classroom is relatively incidental, but the main feature is your ability to talk to each other, know each other, so that you can break these silos as you go into the world. And when you go into the world, you will have the ability with a phone call to talk to each of your classmates, to other students who have graduated, your alumni network, and also to the university. And it is this connectivity which ensures that you will be able to tackle any problem, including unforeseen and unimagined problems of today. So congratulations, all the best, and a great future to all of you. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request technical team kindly play video message of Dr. Raghunath Mashelkarji. Technical team. First and foremost, I want to congratulate very warmly and welcome very affectionately my very dear friend, Dr. Vijay Raghavan. I've known him for a number of years and I admire him, not only for his deep science, great science, but also his science leadership. By accepting our honor of Vigyan Maharshi, I would say, Vijay, you have done us the honor. I admire the deep science that you have done, but what is remarkable about you, when I think of you, I think of our Nobel laureate, Venki Ramakrishnan. His basic degree was in biology, his PhD was in physics, and he got Nobel Prize in chemistry. So it was a mind which flowed across different disciplines so easily. You have the same ability and same accomplishment. For example, you were a fellow chemical engineer, you became chemical engineer, got your degree from IIT Kanpur, but later on you did your PhD in molecular biology. And all the national and international honors have come to you for that deep work that you have done, particularly in developmental biology and the neuromuscular systems, their intricacies, the principles, and it has been a fantastic work. So we admire your science, but also at the same time your science leadership. Like I was a member of Science Advisory Committee to the Prime Minister
with you. We spent time together, and I remember coming to Bangalore and seeing what you had done for NCBS. It was a fantastic institution that you grew, particularly in transdisciplinary work. There is hardly any such institution that shows the excellence of the way NCBS does. And my last words about this award itself, I want to congratulate Rahul Karad for his visionary thinking. When the government is saying no cash award, even the Bhatnagar Prize doesn't have a cash award now. Awards like these, which are not only just sort of prestigious awards, but which are also awards that carry a cash and among the highest, and these are, I think, in private institutions, this is the first unique initiative. So I want to congratulate him at the end too. So thank you very much indeed, Vijay, for gracing this occasion, accepting our honor. Thank you so much again. Thank you, sir, for this video message. Now I would like to call Honorable Professor Ramacharan, sir. But before that, I request technical team to kindly relay the film on the life and contribution of Honorable Professor Ramacharan. Technical team. With a career spanning over 40 years, Professor Ramcharan has been a guiding force for numerous top companies, CEOs, and boards. Professor Ramcharan's passion for business was honed at Harvard Business School, where he earned both an MBA and a doctorate, graduating with high distinction as a Baker Scholar. Having served on the faculties of Harvard Business School and Northwestern University, Professor Ramcharan's expertise and insights have shaped the strategies of leaders worldwide. He has coached over a dozen leaders who went on to become CEOs. Professor Ramcharan is a recipient of prestigious awards, including the Bell Ringer Award at GE's renowned Crotonville Institute and the Best Teacher Award at Northwestern University. Recognized by Business Week as one of top 10 resources for in-house executive development programs, he continues to inspire and educate. An accomplished author, Professor Ramcharan has penned over 30 books, selling over 4 million copies in more than a dozen languages. His contributions extend beyond literature. He was elected a Distinguished Fellow of the National Academy of Human Resources and has served on the Blue Ribbon Commission on Corporate Governance. Professor Ramcharan has also played a pivotal role in NLC Bharat, actively contributing to its vision and journey. Let us welcome Professor Ramcharan. A round of applause, my dear friends. I request Honorable Professor Ramacharan, sir, kindly address the gathering. Thank you. Honorable Minister Shekhawatji, Dr. Vishwarajbaug, Rahul Karad, Vijay Raghavanji, and all the members sitting here. It's an honor for me to take these few minutes with all of you. I want you to open the doors of your mind. That means let new information come in. We call today Naya Bharat. We are. We have been called India by the rulers. Before that, we have been called Hindustan. Our Naya Bharat is on fire. It is on liftoff. Future is what you make. Future does not come from the sky. It comes from people like you, us, other people who are graduating in various parts of Bharat and other places. So I'm going to take you through 6 points
In my work, when I sit in Sao Paulo, Brazil, I look at Bharat from that angle. When I'm sitting in Sydney, Australia, I look at Bharat from that angle. When I'm sitting in Beijing, China, I look at Bharat from that angle. When I'm sitting in New Delhi, I look at India from that angle, Bharat that angle. So let me take you point number one. And that point is, you are graduating in the golden era for the next 50 years. Digest this. You young people are graduating in the golden era. What is that? We're going to grow minimum 6% per annum in GDP, which doubles every 12 years. Our GDP is 4 trillion. In 6 years, it will be 8 trillion. In 12 years, it will be 8 trillion minimum. In 24 years, it will be 16 trillion. In 36 years, when some of you may choose to retire, it will be close to 50 trillion. We know by 2030, we will be number 3. But from a 4 trillion to go to 50 trillion is the golden era. Build it. Enjoy it. Create new things. Yes, we will have ups and downs. But look at the future. We can build this future. Our demographics is beautiful. Our leadership, you provide it. We're opening the doors for India, for Bharat, from outside, new technologies. We have people in the US. Just 5 people in the US today produce equal to the Bharat's GDP. They are born here. They were educated here. And they are the best on the planet. You too can be. So the first point, look into the future. So I'm allowed to work with these people who were high school dropouts, and today they are multi-billionaires. What's about them? They imagine what lies 20 years out. They see the need. They take the jump. They risk. I had occasion to meet the founder of Airtel, Sunil Mittal. He used to ride on the trucks to see how the antennas are. Today he's honored. It doesn't matter whether you have Bachelor of Arts, whether you have Bachelor of Science, whether you have Mechanical Engineering. By the way, you may not know, largest number of finance people have come from Mechanical Engineering in the world. Your education here is what you learn. Your education begins what you're going to learn. And that what you're going to learn need not be what you got the degree in. You saw that the commentary from Dr. Mashilkar. Somebody graduated in physics, got a Nobel Prize in chemistry. So you choose what you do. So number 2, if you believe what I'm saying, the economy is going to grow, surpass the rest of the world except 2, you cannot afford to be obsolete. The greatest danger for graduates, when they go out, they cannot be obsolete.
why the knowledge is expanding exponentially. So idea here is you have to be ahead of the curve, and you got to double your capability every 3 years. Let me repeat that. Double your mental capacity every 3 years till you go with the speed of change. Knowledge today is easily available. Data is easily available. A large part is free. Item number 2, you learned here in a compressed environment. Build your skills to learn with the people you're going to work with. Build your skill in listening and talking to the people and searching what they know you don't know, and you learn from them. Your learning will be done differently as you go into the real world. One of the things I learned, I was young, and I was given a charge to meet and work for the chairman of Unilever. This is 1970s. Chairman Unilever London, big company, largest company on the planet at the time. I met him, tall fellow, Turkish. And when I sat down with him and I began to talk, he took a notebook out and made notes. Then I met the next chairman. I met the next chairman, met the next chairman. They all have a book in which they make notes. My purpose to tell you not the notes. Absorb new knowledge from everybody you meet, put it together, review it. Expand your mind, because mind has unlimited capacity. Number 3, already mentioned, Dr. Vijay Raghavan mentioned, and that is the social networks. Teamwork, build it. You cannot succeed without working with people. Number 4, I examined, I learned from Nobel Prize winners. What's their secret? Their secret is focus. Focus, focus. Find something you learn, something you love to do, get that focus. And then here I want to mention to you, nobody succeeds as well who does not really have ability to listen and ability to make sure what you're saying, others get it. You heard Dr. Mangeshkar, and you saw how clear his delivery was, how clear his message was, how simple his message was. And the last item, you will face this. It will happen. Make sure you have a solid character. Don't wink. Don't do things that violate your Bharat values. I grew up on this. I see these people, biggest people. I also know who cut the corners. You will succeed without cutting the corners. Take these few things that make sense to you. You just start learning differently, focus differently, open the mind that you have a golden Bharat ahead of you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request technical team to kindly relay a film on the life and contribution of Honorable Union Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2024 में उन्हें लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। श्री शेखावत 2014 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री और 2019 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी रह चुके हैं। जल शक्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल से जल परियोजना को युद्ध स्तर पर काम करके उसे जमीन पर साकार किया है। राजस्थान की राजनीति में
गहरी पकड़ रखने वाले श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छात्र राजनीति से राष्ट्रीय सियासत में कदम रखा। गज्जू बन्ना के नाम से लोकप्रिय श्री शेखावत को राजनीति में नए नए रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी संसदीय यात्रा की शुरुआत 2014 में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से रिकॉर्ड जीत के साथ हासिल की। श्री शेखावत 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से ही सांसद चुने गए। छात्र राजनीति से अपनी सियासी यात्रा शुरू करने वाले श्री शेखावत 1992 में रिकॉर्ड जीत हासिल करके जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। दर्शन शास्त्र से MA और MPhil की डिग्री प्राप्त करने वाले श्री शेखावत राष्ट्रीय और इंटर यूनिवर्सिटी स्तर पर बास्केटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं। अपने जज्बे और रोमांचक अंदाज के लिए लोकप्रिय श्री शेखावत विश्व स्काई डाइविंग डे के अवसर पर 12,000 मीटर की ऊंचाई से जंप लगा चुके हैं। चुनावी राजनीति में उतरने से पहले श्री शेखावत सामाजिक कल्याण के लिए कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक रह चुके हैं। राष्ट्र सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए जन कल्याण ही उनके जीवन का सर्वोच्च मंत्र है। Put your hands together, my dear friends, for Honorable Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. I request sir kindly address the gathering. वर्ल्ड पीस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक, साधारण से अपने जीवन पर यात्रा में असाधारण होने वाले, सामान्य से असामान्य होने वाले, और या मैं कहूं कि समय के थपेड़ों से और अपने अनुभव से अपने आप को तराश करके एक पत्थर से एक हीरे का आकार लेने वाले आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब, मंच पर उपस्थित जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और विश्व भर में मैनेजमेंट पढ़ने वाला, शायद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाला शायद कोई ऐसा विद्यार्थी होता होगा जो प्रोफेसर रामचरण को नहीं पढ़ता। मैं अभी देख रहा था माइक पर आने के बाद में वो 84 साल का युवा जिस तरह से बात कर रहा था, उनका हर एक शब्द ऐसा था जैसे सागर में से कोई मोती चुन करके निकाला जा रहा हो। और मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, ये जो घड़ी यहां लगी थी वो जो समय बता रही थी कि समय पे की घड़ी पर कहीं उनकी निगाह न पड़े और उनकी ये यात्रा, जो शाब्दिक यात्रा संबोधन के माध्यम से हम सबको मिल रही थी, वो रसधार कहीं बीच में टूट न जाए। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ाता है वो ये जानता है कि समय की हर एक क्षण की कितना मोल है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आज प्रोफेसर रामचरण के साथ में यहां इस मंच पर आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में भागीदारी कर पाया हूं। मंच पर उपस्थित जिन्हें आज विभूषित किया गया अपनी कर्म यात्रा में, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से इस देश को निश्चित रूप से बहुत कुछ दिया है, और जिनके साथ में
पिछले 5 साल में जब वो नेशनल साइंटिफिक एडवाइजर की भूमिका में काम कर रहे थे और मुझे वाटर एंड सैनिटेशन के फील्ड में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उस 5 साल के कालखंड में जिनके साथ में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला, ऐसे सम्माननीय डॉक्टर के विजय राघवन, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और एक विजनरी युवा, जिनके पास में असीम जज्बा और ऊर्जा है, जिनके पास में एक दूर तक देख सकने की दृष्टि है, जिनके पास में असाधारण मैनेजरियल और इंप्लीमेंट करा सकने की कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज हैं, ऐसे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट श्री राहुल कराड़, प्रोफेसर मिलिंद पांडे, प्रोफेसर चिटनीस, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जोशी, डॉक्टर कामटेकर, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय फैकल्टी मेंबर्स, सामने बैठे हुए सभी संस्थान परिवार के सभी सदस्य। और जब मैं संस्थान का परिवार कहता हूं तो परिवार में सभी स्टेक होल्डर्स, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, ऑल मैनेजरियल स्टाफ, द पेरेंट्स, और आज जिन्हें एक नई जीवन यात्रा शुरू करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिल रहा है, ऐसे मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी साथियों, मैं हृदयपूर्वक अपनी बात कहने से पहले धन्यवाद करना चाहता हूं भाई राहुल कराड़ जी का कि उन्होंने ये सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे आप सबके बीच में आने का प्रदान किया है। पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग इस बात पर विचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के सापेक्ष, और शायद मैं सोचता हूं कि शायद विधाता ने मुझे आज ही के दिन आप लोगों के बीच में आने का ऐसा सौभाग्य दिया था कि जो 2-3 साल से नहीं हो पा रहा था, वो आज सौभाग्य मुझे मिला है। मित्रों, जैसा मेरा परिचय कराते हुए कहा गया कि मैं छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आता हूं, and when I was sitting here and I was watching the university, the infrastructure, when I had entered, since I had entered from the main gate of this beautiful campus, I was driven with the mixed type of emotions, but मिश्रित भाव से मैं गुजर रहा था। एक तरफ मुझे पुराने विश्वविद्यालय के दिन याद आ रहे थे, when I was introduced with the honorable vice chancellor of the university, मुझे अपनी छात्र राजनीति के राहुल भाई दिन याद आ रहे थे। हमारे लिए being a student leader और president of the student union, हमारे लिए सफलता के जो सोपान होते थे उसमें वाइस चांसलर से कितना झगड़ा कर सकते हैं, अपने उस 1-1.5 साल के कालखंड में कितने वाइस चांसलर को रेजिग्नेशन करा करके और वाइस चांसलर बदल सकते हैं, वो हमारे सफलता के जो है वो आयाम हुआ करते थे। मैं याद कर रहा था अपने पुराने विश्वविद्यालय के दिन, जब मुझे छात्र के नाते भी ऐसे समारोहों में भाग लेने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। देश भर में आयोजित होने वाली विभिन्न युवाओं के कार्यक्रमों में भी जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था, सरकारी विश्वविद्यालय में, वहां इस तरह के कन्वोकेशन होने की परंपरा तो नहीं थी, लेकिन छात्रों के कार्यक्रम में लंबे लंबे भाषण कितने उबाऊ होते हैं वो भी मुझे याद है। लेकिन इस सब के साथ साथ में मैं इस रमणीक परिसर और इस महत्वपूर्ण आयोजन, जहां एक साथ लगभग, जैसा मुझे बताया गया, 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी आज ज्ञान की ज्योति से आभूषित होकर के अपने जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। उस यात्रा में जो कुछ मैंने अपने अनुभव से इतने वर्षों में, उस स्थान जिसकी मैंने चर्चा आप सबके सामने की, वहां से प्रारंभ होकर के इस मुकाम तक पहुंचने में जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना,
सौभाग्य से आपके साथ में उनमें से कुछ चीजें साझा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं एक बार फिर यहां पधारे सभी विद्वज्जनों का, यहां पधारे सभी शिक्षकों का, क्योंकि अभी 2 ही दिन पूर्व हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया है, मैं उन सारे शिक्षकों के प्रति सम्मान और उनके चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए छात्रों, अभिभावकों और सभी माननीय अतिथियों को सादर नमन करता हूं, उनकी सारस्वत उपस्थिति को नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज का अवसर दीक्षांत का अवसर है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने अपने अनुभूत ज्ञान से, हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अपने अनुभूत ज्ञान से इस बात को प्रतिपादित, इस सिद्धांत को प्रतिपादित हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में किया था, और उसीलिए उन्होंने यह विद्याध्ययन का एक काल समाप्त होने के इस अवसर को दीक्षांत की संज्ञा दी। जिस दीक्षा के लिए आपने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था, जिस हेतु को लेकर के प्रवेश किया था, वो हेतु शायद समाप्त हो गया है, वो अध्याय शायद पूरा हो गया है, लेकिन शिक्षा का कभी अंत नहीं होता। इसलिए इसको शिक्षांत की जगह दीक्षांत का समारोह, ऐसी संज्ञा हमारे तैत्तरीय उपनिषद में दी गई। जीवन पर्यंत हम सबका विद्यार्थी भाव बना रहे। अभी यदि जैसा आदरणीय प्रोफेसर रामचरण कह रहे थे, और मैं जब रामचरण साहब के शब्दों को सुन रहा था, मैं मंत्रमुग्ध होकर के सोच रहा था कि उन्होंने जो कुछ मुझे कहना था, जो कुछ मैं सोच रहा था, उसमें से अधिकांश विषय उन्होंने आप सबके सामने रखा है। मेरा वजन कुछ हल्का हो गया था, लेकिन निश्चित ही मैं आज फिर एक बार जिम्मेदारी के साथ में आप सबको कहूंगा कि इस अवसर पर हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में हमारा विद्यार्थी भाव हमेशा बना रहे, और वो इसलिए और भी ज्यादा आवश्यक और प्रासंगिक आज की व्यवस्था में, आज की अवस्था में हो गया है, क्योंकि तकनीकी के इस कालखंड में जब हमारे ज्ञान का क्षेत्र और उसका बेस इतना ब्रॉडन अप हो गया, इतना बढ़ गया, इतना चौड़ा हो गया कि जो कुछ ज्ञान सहस्त्राब्दियों में, हजारों सालों में अर्जित किया था मानव ने अपने इवोल्यूशन के इस प्रोसेस में, उद्विकास की इस यात्रा में, जो हजारों सालों में जितना ज्ञान अर्जित किया, उतना पिछले कुछ 100 साल में शायद उससे अधिक ज्ञान मानव ने अर्जित किया होगा, खोजा होगा। जो पिछले 100 साल में या सैकड़ों सालों में अर्जित किया, प्राप्त किया, उससे कहीं कहीं ज्यादा पिछले कुछ दशकों में शायद उससे बेहतर ज्ञान या उससे अधिक ज्ञान को अर्जित किया होगा। और जो कुछ पिछले दशकों में हुआ, आज प्रतिवर्ष या प्रति माह हम देखें कि उससे बहुत सारे नए अन्वेषण, नई खोज, नए ज्ञान इस धरती पर जब अन्वेषित हो रहे हैं, तब हम सब के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जीवन में विद्यार्थी भाव बना रहे, हम नित्य निरंतर सीखते रहें। वी हैव टू कीप आवरसेल्फ अपडेटेड एंड वी हैव टू रीस्किल आवरसेल्फ एवरी ईच एंड एवरी डे। क्योंकि यदि दीक्षांत पर विद्यार्जन की को समाप्ति का अवसर मानते हुए यदि हमने अपने आप को रोक दिया, तो मित्रों, हमारे ऋषियों मनीषियों ने इस सनातन व्यवस्था में इस बात की संकल्पना की है कि ठहराव जो है वो सड़न पैदा करता है। ठहराव सड़न पैदा करता है, और सड़न जो है वो क्षरण की तरफ लेकर के जाता है, वो समाप्ति की ओर लेकर के जाता है। और जो निरंतर प्रवाहित होता है, वो प्रवाह नया जीवन प्रदान करता है, नूतनता प्रदान करता है, और वो निरंतरता प्रदान करता है। इसलिए हमारे जीवन में हम निरंतर सीखते रहें, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, इस अवसर पर जब ज्ञान और बोध की दीक्षा के अलंकरण का अवसर है, मैं तो बहुत आह्लादित था जब ये देख रहा था कि जिस कागज में जो मुझे भेजा गया था कि सैकड़ों विद्यार्थियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन करते हुए अपने आप को पार एक्सीलेंस अपने आप को सिद्ध किया है, जिन्होंने गोल्ड मेडल अर्जित किए होंगे, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे होंगे, जिन लोगों ने
यहां पे रिसर्च करके और अपनी प्रतिभा के आधार पर अध्ययन करके, निरंतर परिश्रम करके, रात रात भर जा करके दे माइट हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल, और उसको पढ़ करके अपने आप को सिद्ध किया होगा, इस संस्थान को गौरवान्वित किया होगा। मैं ऐसे सारे मेधावी, ऐसे सारे होनहार लोग जिनको ये सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, उन सबको हृदय पूर्वक बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज का अवसर निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्ट करने का अवसर है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपने कहां से डिग्री प्राप्त की है, कहां से पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, अ फ्यू ओनली, बहुत थोड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में इसकी महत्ता रहने वाली है। आने वाले समय में ये जो कुछ हमने यहां पढ़ा है, ये हमारे लिए फंडामेंटल नॉलेज हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये नॉलेज जो है, आप जीवन के जिस क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे, ये धीरे धीरे इररिलेवेंट होता जाएगा। जो कुछ रेलेवेंट रहेगा वो हमारे नया सीखने की क्षमता, रिस्क लेने की कैपेसिटी, और आगे बढ़ जाने के लिए, प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में आगे बढ़ने के लिए हमारा जो है परिश्रम, वो ही सब कुछ जो है वो हमारे जीवन में रेलेवेंट रहने वाला है। मित्रों, हम सब लोग उस सौभाग्यशाली अवसर में, जब इतना सारा ज्ञान की संपदा, जैसे आदरणीय प्रोफेसर रामचरण अभी हम सब के सामने जो बात कर रहे थे, अथाह नॉलेज का भंडार हम सब के सामने, मुझे स्मरण आता है और मैंने कई बार उस बात को कोट भी किया है। When I was a student, मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था उस समय में हमको अपने यहाँ कुछ भी रेफरेंस के लिए, बीइंग ए स्कॉलर स्टूडेंट, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ने के लिए, किसी भी नए विषय को जानने के लिए केवल एकमात्र सोर्स हुआ करता था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। और उस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के जो 34 वॉल्यूम्स जो तब तक आए थे, मेरे लिए लाइब्रेरी में वो सबसे महत्वपूर्ण विषय था। जब कभी भी कुछ नया देखना है उसमें ढूंढते थे, थोड़ा सा लिखा हुआ उसमें मिलता था, और मेरे को मन में ये उत्कंठा थी कि जब कभी भी मेरे पास में स्व अर्जित धन होगा, खुद का कमाया हुआ पैसा होगा, मैं जरूर अपने घर में मेरे लाइब्रेरी में जो है वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रखूंगा। समय बदला, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में मैंने अपना काम करना प्रारंभ किया। समवेयर अराउंड 2000 आई वाज ट्रैवलिंग इन, और उससे पहले शायद 96-97 में आई वाज ट्रैवलिंग इन ऑस्ट्रेलिया। मैं अपने काम के सिलसिले में गया था, मेरी छोटी बहन वहां रहती थी। एक वीकेंड के दिन सुबह सुबह रनिंग करने के लिए घर से गया। जब घर से निकला, वेस्टर्न वर्ल्ड में आपके पास में अगर कुछ अनुपयोगी वस्तु आपके घर में है तो उनके यहाँ व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो माताएं उसको जो है इकट्ठा करके रैप अप करके और ऊपर कहीं रख देती हैं। वहां ये व्यवस्था होती है कि टेबल पर एनी जेंटलमैन कैन पिक अप, ऐसा प्लेकार्ड लगा करके टेबल पर या घर की दीवार पर रख देते। मैं दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते मेरी निगाह उस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के सेट पे जो टेबल पर लेदर बाउंडेड विद गोल्डन लेटर्स जो है वो लिखा हुआ पड़ा था, उसके ऊपर एनी जेंटलमैन कैन पिकअप लिखा हुआ था, और मेरे पांव वहां चिपक गए। मैंने सोचा मैं जेंटलमैन तो हूं, लेकिन ये भारतीय मानसिकता, किसी चीज को उठा करके लाना वो थोड़ा अलाउ नहीं करती। मैं वापस दौड़ते दौड़ते अपने घर में आ गया। मेरे दिमाग में जो है वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका घुसा हुआ था। मैंने शाम को, जब मेरी छोटी बहन और हम साथ बैठे थे, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये मैं आज देखा था, मेरे इतने सालों से इच्छा थी कि मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदूं, अपने घर में रखूं। वो उठी, उन्होंने अपनी ड्रॉअर खोली, एक सीडी निकाल करके मुझे दिया जिसमें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी थी। लेकिन मित्रों, पिछले इस 25 साल के कालखंड में गंगा में बहुत सारा पानी बह गया। अब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इरेलेवेंट हो गई, उससे लाखों गुना ज्ञान जो है आपकी फिंगर टिप्स पे आ गया। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना, खोजना अब उतना बड़ी चुनौती नहीं है। आप एटॉमिक बम बनाने से लेकर के और मिसल पाव बनाने तक कुछ भी सीखना हो, अभी यूट्यूब खोलो, आपको सब कुछ मिलेगा। अब जरूरत यह है कि वर्तमान में प्रासंगिक मनुष्य के जीवन को और अधिक जो है वो समृद्ध करने, केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, अन्यथा भी समृद्ध करने के दृष्टिकोण से जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस विषय की आवश्यकता है, उस काल सापेक्ष आवश्यक विषय को समझ करके उस विषय को हम किस तरह से सिरे तक लेकर के जाएं,
यह समय की मांग और आवश्यकता है। आज कॉन्सेप्ट को ग्रो करके उस कॉन्सेप्ट को रियलाइज करने पर, धरती पर उसको रियलाइज करने की आवश्यकता है। और मित्रों, ऐसे समय में जब आज आप इस दीक्षांत के बाद में उस वास्तविकता की धरातल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आज विचार करिए रात को सोते समय, क्योंकि ये आपके जीवन का एक ऐसा माइलस्टोन होगा। आपने बहुत साल तक पढ़ाई की होगी, स्कूल में अध्ययन किया होगा, आपके पेरेंट्स ने शायद अपना पेट काट करके आपको पढ़ाया होगा, आपने अपनी आकांक्षाओं अपेक्षाओं का दमन करके आपको यहां भेजा होगा, आपने रात रात भर जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, तब जाकर के आप इस ख्यातनाम विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के काबिल बने होंगे। आप कल्पना कीजिए, समाज में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे सुंदर विश्वविद्यालय में ऐसे उत्कृष्ट अध्यापकों के साथ में पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला होगा। लेकिन इस बात की भी आज विचार करिए, आज की रात में इस बात पर भी विचार करिए, अब तक जब आप विद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तब आपकी हर गलती को करेक्ट करने के लिए आपके पीछे कोई ना कोई टीचर खड़ा था। आपके पास सुधार की गुंजाइश थी, आपके पास सुधार का मौका था। आने वाले समय में किसी सुधार की गुंजाइश इस कट थ्रोट कंपटीशन के दुनिया में नहीं मिलेगी। बॉसेस, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी सो जेनरस जितने कि आपके टीचर्स थे। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। और इस कंपटीशन के समय में हम सब लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है कि हम अपने आप को प्रूव करें। आप जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के काम करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपने आप को रेलेवेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने आप को रेलेवेंट बनाएंगे तभी आपकी पहचान बनेगी। जब आपकी पहचान बनेगी तब आपको अवसर मिलेगा, जब आपको अवसर मिलेगा तब आप सक्सेसफुल होंगे, और जब सक्सेसफुल होंगे तब अपने आप से, तब आप जो है सेटिस्फाई हो सकेंगे अपने जीवन में, आप अपने आप पर गर्व कर सकेंगे। इसलिए मित्रों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम अपने आकांक्षाओं की आपूर्ति के दूसरे पड़ाव पर आकर के पहुंचे और यहां से हम जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, मैं आप सबको हृदय के पूर्वक शुभकामनाएं देते हुए हम अपने जीवन में परिवर्तित होते हुए इस विश्व में अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए उसके साथ कदम ताल कर सकें, कदम ताल करें, इस बात की प्रेरणा आप सबको देना चाहता हूं। मित्रों, ज्ञान और शिक्षा के इस यशस्वी परिसर में आकर के आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड दिस इज द गोल्डन टाइम। मेरे को अगर मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन समय कोई था तो वो विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में जब मैंने पढ़ाई की, वो 5-6 साल मेरे जीवन के सबसे उत्कृष्ट समय थे। आप भी अपने जीवन में यू आर गोइंग टू चेरिश दिस टाइम, सो डू कीप योरसेल्फ कनेक्टेड विद योर अल्मा माटर। हमेशा इसके साथ में जुड़े रहें। देखिए, कोई भी संस्थान कब समृद्ध होता है? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता, और स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो सबसे पहली समृद्धि आती है वहां की फैकल्टी से, वहां के टीचर्स से। उसकी शुरुआत होती है द विजनरी पीपल बिहाइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन, वहां से शुरुआत होती। फैकल्टी उसको एनरिच करती, और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद में आता है। यू आर सो ब्लेस्ड दैट आपके यहाँ अच्छी फैकल्टी है, आपके यहाँ बहुत अच्छा उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लेकिन उसके बाद में अगर कोई आता है तो वो है उसका एल्यूमिनाई, जो कितना डीपली कनेक्टेड रह करके और उस पूल को, उस जो है पूल ऑफ टैलेंट को आगे आने वाले समय में भी निरंतर समृद्ध करता रहे। हम अपनी इस अल्मा मातेर से, हमसे पहले आने वाले और हमसे बाद आने वाले विद्यार्थियों के साथ में अपना जुड़ाव रखते हुए आने वाले समय में उनका पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन कर सकें, ऐसी भी मैं अपेक्षा आप सबसे आज इस अवसर पर रखना चाहता हूं। मित्रों, आज आप सब लोगों ने उपाधि प्राप्त की है। कड़ी मेहनत के बाद में आप सबको ये उपाधि मिली है, और ज्ञान के इस महान परिसर और इस परंपरा के साथ में हमारा जुड़ाव बना रखने के साथ साथ में जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है और जो कुछ समय हमने बिताया है, दिस इंस्टीट्यूट इज आवर आइडेंटिटी। सो इन वट एवर इन द रियल वर्ल्ड, वट एवर वी स्पीक, वट एवर वी डू, हमारा एक एक कदम जो है वो हमारे परिवार के साथ साथ में, जो अभी आदरणीय रामचरण साहब कह रहे थे कि अपने कैरेक्टर की जो बात कर रहे थे, उसके साथ में जोड़ करके मैं कहूंगा कि आपके द्वारा बोला गया एक भी शब्द, आपके द्वारा उठाया गया एक भी कदम, वो हर कदम आपके परिवार के साथ तो परिभाषित होगा ही,
इस संस्थान के साथ में भी परिभाषित होगा। यू विल फॉर योर लाइफ टाइम यू आर गोइंग टू बी एम्बेसडर ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूट। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि हम जो कुछ भी करें, जहां कहीं भी काम करें, हमारे कारण से हमारे इस संस्थान की समृद्धि, हमारे इस संस्थान की प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती रहे। जो युवा साथी यहां बैठे, मैं अंत में अपनी बात कहने से, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा, अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। मित्रों, आपकी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली पीढ़ी है। और वो सौभाग्यशाली इसलिए, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, प्रोफेसर रामचरण ब्राजील के साओ पाउलो से लेकर के चाइना के बीजिंग तक के परिप्रेक्ष्य में भारत को देख रहे, तो मैं तो भारत की दृष्टि से भारत को देख करके आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह से भारत ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले 10 साल में ही हमने सब कुछ किया है, आजादी के बाद से लेकर के धीरे 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 प्रगति करते हुए भारत आज जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है, आजादी के बाद के इस 10 साल के जो प्रगति का दौर था, हम शायद इस बात पर डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि जिस तरह की संभावनाएं भारत में थी, शायद हम उस दृष्टिकोण से प्रगति नहीं कर पाए हों। जिन लोगों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया था, अपने आप को इस भारत माता की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया था, ऐसे हजारों लोग जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए होंगे, ऐसे हजारों लोग जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई होंगी, कालकोठरियों में यातनाएं सही होंगी, कोल्हू में बैल की तरह, सावरकर की तरह जोत दिए गए होंगे, हजारों लोग होंगे जिन्होंने लाठियों की मार सही होगी, कोड़ों के प्रहार सहे होंगे। उसके बाद में जो देश आजाद हुआ, ये निश्चित रूप से हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल था और जितना बलिदान की जिस पृष्ठभूमि में खड़े होकर के हम आजाद हुए थे, हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 10 साल के इस कालखंड में जिस तरह का परिवर्तन इस देश ने देखा है, जो मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौतियों से जूझ रहे समाज को बाहर निकाल करके एक आशा से अभिसिंचित, एक उत्साह से अभिचिंतित समाज का सृजन जिस तरह से पिछले 10 साल में हुआ है, और आज पूरा देश जो निराशा के घोर अंधकार में डूबा हुआ था, आज उत्साह के साथ में 140 करोड़ लोग भारत को विकसित बनाने की दिशा में कदम ताल कर रहे हैं। और इस अमृत काल में 25 साल में हम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने की दिशा में जब जुटे हैं, तब मित्रों मैं कहता हूं कि हम जो है, ये आप सबकी पीढ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली पीढ़ी है। और वो इसलिए, मैं आपकी तरफ देख करके इसलिए कहता हूं कि आपकी पीढ़ी एकमात्र ऐसी पीढ़ी होगी, हम जो मंच पर बैठे लोग हैं, जब 25 साल बाद में देश विकसित भारत बनेगा, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, इतना स्पष्टता के साथ में देख सकता हूं कि अब भारत जिस रास्ते पर चल पड़ा है। प्रोफेसर रामचरण इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहे थे कि किस तरह से हम आने वाले समय में हम हर 6-12 साल में दुगनी गति करते हुए, लेकिन यह भी एक डिबेटेबल विषय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की संभावनाओं के द्वार पर भारत खड़ा है आज, जिस तरह से हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, जिस तरह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बढ़ा है, जिस तरह से हमारे 3 साल में हमने हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर की है, जिस तरह से 3 साल तक से लगातार विदेशी निवेश भारत में हाईएस्ट आया है, हम वी आर ऑन द हिस्टोरिकल हाई फॉरेन रिजर्व कैपिटल रिजर्व पर हम सब लोग बैठे हैं, वो सब के चलते हुए हो सकता है कि ये डिबेटेबल विषय हो सकता है कि हमारी गति की दर जो प्रोफेसर रामचरण ने आकलित की है, या अभी अभी प्रोफेसर चेम्बर्स ने जो इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद के हेड हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कहा कि आने वाले इस सदी के अंत तक हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना को पीछे छोड़ करके बन जाएंगे, ये डिबेटेबल विषय हो सकता है। लेकिन ये तय है और निश्चित है कि हम जिस मार्ग पर चल पड़े, अब भारत विकसित होकर के रहेगा, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी इसलिए है कि आपकी पीढ़ी अंततः इस बात पर गर्व कर सकेगी कि इस भारत के भाग्य को बदलने का काम हम लोगों ने किया। और आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है, इन मंच पर बैठे हुए हम लोगों से भी ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए है कि आप लोग न केवल उस भारत के भाग्य विधाता और बदलाव के वाहक बनोगे, अपितु उस बदले हुए भारत में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकोगे, जो शायद मंच पर बैठे हुए हम अधिकांश लोगों के नसीब में नहीं होगा। आपसे आने वाली, बाद में आने वाली पीढ़ियां भी वो इस बदले हुए भारत में रहने का सौभाग्य तो प्राप्त करेंगे, इस विकसित भारत के महान नागरिक तो हो सकेंगे, लेकिन वो ये गर्व करने के अधिकारी नहीं होंगे कि इस भारत को हमने बदला था। ये केवल आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इस सौभाग्यशाली समय में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए मित्रों, इतिहास बनाने का समय, इतिहास सृजन का समय, इस इतिहास सृजन के समय में जब ये सौभाग्यपूर्ण अवसर हमारे सामने है
कि हम ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जब देश बदल रहा है, एंड दिस अपॉर्चुनिटी कम्स वेरी रेयरली। आज़ादी के समय में ये अपॉर्चुनिटी आई थी, तब भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने अपने आप को उत्सर्ग करके इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अपना नाम अंकित किया था। आपको बलिदान की आवश्यकता नहीं है, केवल योगदान की आवश्यकता है। हम जहां कहीं भी रहें, जिस किसी भी भूमिका में काम करें आने वाले जीवन में, इस लक्ष्य के साथ में, इस विचार के साथ में कि मेरा उठाया गया हर कदम और मेरा किया गया, मेरे प्रसिद्ध का हर एक बिंदु इस राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है, इस लक्ष्य के साथ में जुट जाएं। और जो स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है, उत्तिष्ठ जागृत, और उस उत्तिष्ठ जागृत को संकल्पबद्ध होकर के हम सब लोग जुट जाएं, आगे बढ़ें और इस देश के निर्माण, इस देश के बदलाव के भाग बने। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आप जो है हम सब भारत माता के उत्थान के वाहक बनेंगे। भारत माता को एक बार फिर विश्व के पटल पर जो सम्मान के अधिकारी भारत माता हैं, उस सम्मान का अधिकार दिलाने के लिए काम करेंगे। उन सारे लोगों ने जिन्होंने इस यात्रा में इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए, इस सनातन संस्कृति को इतने हजारों सालों तक हो रहे सारे हमलों में बचाए रखने के लिए जिन्होंने अपने आप को नियोजित किया, जिन्होंने अपने आप को खपा दिया, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम इस दिन भारत को विश्व का सबसे समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न भारत बनाएं और विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि भारत के द्वारा अर्जित की गई उपलब्धि केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस महत्वपूर्ण दायित्व के साथ में हम यहां से प्रयाण करें और अपने आप को इस महान लक्ष्य के लिए खपा दें। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका हृदयपूर्वक अभिनंदन। भारत माता की धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आज हम सौभाग्यशाली है जो आपके मार्गदर्शन पर और प्रेरणादायी शब्द हमें सुनने को मिले। धन्यवाद सर। Now, as you all know, our students with our respected guest, we have clicked one memorable group photograph at the stairs of world's largest dome. So I want to say a few words about world's largest dome. Revered Professor Dr. Vishwarajbaug Karad's life mission to establish a culture of peace in the world and deliverance of value-based universal education is embodied in the establishment of World Peace Prayer Hall and World Peace Library. An architectural wonder and the world's largest dome symbolizes the quest for world peace. I request technical team kindly relay the film related to World Peace Dome, world's largest dome. This country has always propagated one thought, Vasudhaiva Kutumbakam, my dear friends. I must say that in the entire history after the independence since 1947, this is one of the unique steps towards the contribution of universal humanity. I appeal to the Vice President and Honorable Chief Minister to recognize this World Peace Dome as a structure of national and global importance and support to promote it in such a way that it evolves as one of the prominent tourism destinations of the world. We should remember and respect like Professor Vishwarajbaug Karad and millions of people like that, and remember the great service they have done. They should be remembered forever. That is also equally important for all of us. This is the message of this dome. This is the idea of the dome. This is the tallest, not only in size, but also in ideas. But if it takes away the rest of the days of my life and gives me one day where I can come back and look at this magnificent dome, magnificent message to the rest of the world, to me, this is not just the biggest dome in the world. To me, this is the biggest idea, the biggest message to the world. Science without religion is lame, and we all know this: religion without science is blind.
My dear friends, put your hands together to the creator of world's largest dog, Professor Dr. Vishwanath Karad sir. I request Honorable Karad sir kindly address the gathering. Friends, it truly fills my heart with a sense of pride and pleasure when I stand before you on this most auspicious occasion of the 6th Convocation ceremony. And what a good fortune, friends, that today we have the most revered and respected chief guest for today's function, गजेंद्र सिंह शेखावत जी. बड़ा भाग्यशाली क्षण है. जो भी आपने बात किया वो शब्दों का खेल नहीं, वो आपके अंदर की आवाज़ थी, आत्मा की आवाज़ है और शायद मन की बात भी है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि one of the greatest person in the field of management, the guru, management guru, ऐसे तो बहुत होते हैं दुनिया में. एक नाम है जिसका नाम लेती है दुनिया झुक जाती है. उनका नाम है रामचरण जी. भाई मेरे दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है, कभी उनका जीवन चरित्र पढ़ो. कहाँ से आए, कैसे बने, और दुनिया के सामने एक ऐसा रोल मॉडल. And the words of wisdom which he spoke, about which our Honorable Chief Guest Gajendra Singh Shekhawat ji ने बयान किया. And what a good fortune, friends, हमारे डॉक्टर कृष्ण स्वामी विजय राघवन के बारे में ये भी बड़ा भाग्यशाली दिन है. Those students and the parents who are present in the pandal, I know that you will be leaving the portals of this institution after passing your various degrees and the qualifications with PhDs and masters and bachelors. But remember, friends, maybe some of the parents are present here, maybe your grandmother, grandfather must have been waiting at your residence. आपका जो भी घराना है, एक कुलीन घर से आप लोग आए हो. भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय तत्वज्ञान की जिक्र की जाती है. At the same time, we speak about the Google, the Facebook, IT, computer, and all these mechanisms which have come to the front. I want to only make one or two statements. It was in the year 1893 when the great noble son of India, Swami Vivekananda, had made a prophecy. And he had told the world in Chicago, in the first World Parliament of Religions, you know it very well, but I have been a staunch follower. The most revered, a messenger of peace, Mahatma Gandhi and Tathagat Gautam Buddha. कि कौन थे, क्या थे, कैसे आना हुआ, क्या मकसद था जीवन का, आप सोच सकते हो. किसी व्यक्ति पूजा की बात नहीं, लेकिन when we are passing through the most chaotic, confused state of affairs today, we are trying to recollect the contribution and the pathway for world peace. छोटी सी बात है, लेकिन अपने जीवन में तुम्हारे माँ बाप जो राह देख रहे, and when you will be leaving the portals of this institution, possibly you have a great duty to perform, which has been very briefly narrated by all the guests because of time constraint. But I feel highly satisfied. मैं यहाँ लंबी बात करने से मुझे बहुत खुशी है. आज की तीनों सम्मानीय अतिथि, इनके मुख से जो बयान हुआ,
It was not an information or a data collection. Information, data collection, the message from Google or the Facebook. You know what happens about Facebook. In Lebanon, आपने सुना है क्या दिशा क्या है, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उसके बारे में राहुल ने कहा that we have to adopt a pathway of world peace through the appropriate understanding of the role of science and role of spirituality. धर्म क्या है भाई, और मेरा फर्ज क्या है. बड़ी लंबी सुंदर कहानी है और जिस डोम की भाषा हुई. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाइयों को, कभी जाके देखो तो सही. When the whole world, it is either the Great Britain, the Oxford, Cambridge, MIT, Boston, you take the name, and all the great universities of the world are seeking for a solution. What should be the education system? And it is said value-based universal education system. अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, दो शब्द है. And the world is in search of any institution, any university in the whole world. And when I said to you, friends, this monumental creation, which I am not the creator, I am not the maker, but I am an instrumental. But one thing I would advise my friends, that it is now being recognized world over, not by India alone, as a spiritually oriented scientific laboratory. ये नाम है उसका, मैंने नहीं दिया. संत ज्ञानेश्वर to Einstein is the journey. No comparison being made. But finally, when the Vivekananda says that 21st century or this 24th century would be the century of India, Mother India, Bharat, जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा. It will show the pathway of peace and harmony to the whole mankind. ये वक्त आ गया है. एंड बात होती है हमेशा, विश्व गुरु का उच्चारण होता है विथ अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. हमारे राम साहब ने कहा, कौन सी कसम खानी है भाई, संकल्प तो करना है जीवन में. तुम्हारे माता पिता घर वाले राह देख रहे ना कि मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसी बनेगी और दुनिया के सामने एक रोल मॉडल बन के काम करेगी. ये सारी बातों का जिक्र हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बड़ी भाव से, बड़े दिल से उन्होंने बताया आपको. I think those words of wisdom we will certainly remember. And this university, World Peace University, which has been following on the footsteps of Sant Jnaneshwar to Einstein, इसका मतलब समझने की कोशिश करो. मैं अभिवादन करता हूँ सारे मेहमानों को और आप सभी को धन्यवाद. Thank you so much, sir. Put your hands together, my dear friends. A huge round of applause for the visionary founder, President, Professor Dr. Vishwarajbaug, sir. Thank you, sir. Now I request, I would like to call Aryan Gauri, one of our students, to announce regarding the Great Indian Startup Challenge funding program. Aryan Gauri. Today I am thrilled to bring to your attention the Great Indian Startup Challenge, a remarkable initiative that is all set to fund and ignite the entrepreneurial spirit among our students, to fund the student startups. This challenge, launched under the visionary leadership of Rahul Karad sir, aims to identify student startups who have high potential to convert their particular ideas into startups that can achieve success. With a funding pool of rupees 1.5 crore, we are here to support ideas that have potential and to create impact. The details of the challenge is already shared to all of the students on their email IDs. The pitch decks can be mailed to eCell's email ID. I request all the students who are now the alumni to kindly register for the challenge to convert their particular idea into a startup that can be launched. Thank you.
Thank you. May I request now Controller of Examinations, MIT World Peace University, Honorable Dr. Rahul Joshi sir, to kindly propose vote of thanks. Good evening, everyone. It is a great honor to propose the vote of thanks at this grand occasion of Convocation. On behalf of Founder President and UNESCO Chair, revered Professor Dr. Vishwarajbaug Karad sir, Executive President, MIT Group of Institutions, Rahul Karad sir, trustee members, faculty, staff and students of MIT World Peace University, we express our sincere gratitude to our chief guest, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Union Minister for Culture and Minister for Tourism, Government of India, for gracing the occasion. In spite of his busy schedule, he came and enlightened the graduating students of our university. So we are really thankful to you. We are also thankful to the guest of honor, Professor Ram Charan, for his esteemed presence and words of wisdom. We express our sincere thanks to Vijnan Maharshi, Honorable Dr. K. Vijay Raghavan, sir, for your acceptance of the Vijnan Maharshi Award, and your presence in the convocation ceremony has elevated the stature of the program. We are thankful to revered Professor Vishwarajbaug Karad, sir, our founder president and also creator of the World Peace Dome, for his blessings and the prestigious and making this event prestigious possible. Thank you, sir, for your time and being here and with your blessings. Honorable Executive President Rahul Karad, sir, has been a constant source of energy and inspiration as well as motivation. This has truly helped in conducting this event smoothly. Thank you, sir, for being with us in every moment while organizing this event. We thank Honorable Vice Chancellor Chitnis, sir, for valuable inputs from time to time and guidance that we received during this organization. Then Registrar Shri Pokle sir provided all valuable institutional support to make this event successfully happen. We express our sincere thanks and heartfelt gratitude to Pro Vice Chancellor Milind Pandey sir, Chief Academic Officer Sanjay Kamtekar for being the pillars of motivation and support. We also thank Deans, Associate Deans, Program Directors, Program Managers and their teams of executive, all faculty members and staff members for taking the idea of convocation ahead so that maximum participation of graduating student is ensured. We express our sincere thanks to Academic Council, Board of Management, governing body of our university and the Board of Trustee MIR for their valuable support. We express special thanks to event management team, organizing team, media team, transport accommodation to take this idea into the next level. We take this opportunity to express our sincere thanks to the press and media. Your wide coverage to the pre-convocation briefing has really helped us. We request your support further in taking the report of our today's convocation to the various channels of print and digital media. Thank you once again. Our parents have been a constant support of inspiration to us. Your awards have started their life transforming journey with us. Your unwavering support to us have helped us to reach this destination today. On behalf of the management, we mark this as the beginning of a new journey with you. Thank you all for being with us as a constant source of encouragement, and your valuable inputs have helped us to improve our systems. Most importantly, this ceremony belongs to the students of graduating batch of 2024. We are thankful to you, dear students. You have kept us going in this academic journey. Your energy, enthusiasm has always been a constant source of encouragement. We express our sincere thanks to you and extend best wishes to you the journey ahead. Most important, the untiring efforts of all staff members of the Department of Examination lasted 2 months. Thank you all. With this, I formally conclude the vote of thanks and I prefer with my colleagues to remain in the thankfulness to all of you. Now, I request Honorable President to declare the Convocation 2024 closed. All my learned friends, I declare MIT World Peace University Convocation 2024 closed. Thank you, sir. Thank you very much. I request all the respected dignitaries and everyone in the audience kindly rise in your seats for the national anthem. Technical team, kindly play national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमालय
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की. Thank you. Thank you all the dignitaries. Thank you all my dear students. And congratulations to all. Just pay attention to the announcement as it is necessary. Kindly note, my dear students and parents, cohort number 1, 2, 3, 4, 5.